जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का प्रोग्राम जो है वो कामरान शफी साहब के साथ खसूसी प्रोग्राम है और हम डिस्कस करेंगे बहुत सी बातें पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं, यूक्रेन के रेफरेंस से जो पॉलिसीज़ हैं वो, और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो हो रहा है, मार्च पाकिस्तान में हो रहे हैं वो भी, और पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं इस सिलसिले में, उन सिलसिले में बात होगी। और कामरान शफी साहब जो हैं वो विल बी काइंड ऑफ की नोट स्पीकर आज के मीटिंग में, और हमारे साथ मोहम्मद शफीक साहब मौजूद हैं, और कर्नल मकबूल मलिक साहब जो हैं वो उम्मीद है जब ज्वाइन कर लेंगे हमें, तो अभी इंशाल्लाह शुरू करते हैं। तो Kamran Shafi Saab trying to get on the camera. Can you hear me? Yes, I can hear you, but I can't see you. Oh, I'm having a bit of trouble with my internet. I'm sorry. Now? जी हाँ जी, अब ठीक है, कैमरा सेट कर लीजिए। There you go. एक मिनट। जी। तो Here I am. That better? जी, this is a lot better. Okay, thank you. ऊपर की तरफ थोड़ा सा भी मतलब क्लियर नहीं है। या let me put it back. जी जी। That's fantastic. That's very good. Okay, excellent. जी। तो सर प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। तो शफीक साहब मौजूद हैं हमारे पास, और कर्नल मकबूल मलिक साहब जो हैं वो इंशाल्लाह थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। और जैसे मैंने पहले कहा कि आज के हमारे जो हैं वो चीफ गेस्ट कह लीजिए, की नोट स्पीकर कह लीजिए, वो कामरान शफी साहब हैं। तो बात हम उनसे शुरू करेंगे, और उनका जो एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, पॉलिटिक्स में है, उसके बाद उनका डिप्लोमेसी में है, उनका मीडिया में है, तो वो काफ़ी तवील है, और उसमें से बहुत सी बातें हम उनसे सुनेंगे, सीखेंगे, और फिर जब वो अपनी बात मुकम्मल कर लेंगे फिर हम उनसे सवाल करके उनको तंग भी करेंगे। तो शफीक साहब और कर्नल साहब से सवाल पूछेंगे, मैं भी कुछ पूछ लूँगा। तो अभी सर बात जो शुरू करना चाहते हैं वो ये है कि आप का एक्सपीरियंस इतना तवील रहा है, आपने अपने फौज से अपनी ज़िंदगी शुरू की, फिर आप बहैसियत जर्नलिस्ट आपने काफ़ी अर्सा काम किया, फिर आप एज ए डिप्लोमेट जो है मिनिस्टर रहे लंदन में, और प्रेस इंफॉर्मेशन में आप PIO रहे, प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर रहे, और इसके दौरान आपका बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा पीपल्स पार्टी से, ख़ुसूसन बीवी बेनज़ीर के साथ, और उसके बाद जो आपके एक्टिविटीज़ हैं सारी वो मालूम है। तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपने बारे में कुछ बता दें लोगों को, जो मैंने कुछ बताया, आस्क यू अबाउट डिफरेंट क्वेश्चंस अबाउट पाकिस्तान। So thank you very much, sir, for coming in. और please floor is to you, and please आप शुरू कीजिए। Thank you, Rai Bahadur. I don't know where to start really. मेरा तो सिर्फ एक abiding जो चीज मैंने देखी, the moment I got into PIO's office, was that there were so many centers of power, if you like, in Pakistan, which made it extremely difficult for the elected leadership to really lead. I mean, they were always being thrown darts at. जो darts they think they. Ghulam Ishaq Khan was running his own parallel administration in conjunction with Aslam Beg, who was then the army chief. If you remember, वो एडमिरल सरोही का जो किस्सा था जी,
यानी क्या तमाशा बना के रख दिया था हमने पूरी दुनिया के सामने. Every paper was having, foreign paper was having a field day at it, making fun of us. And only because the establishment did not want to hand over real power to the elected leader, which was Benazir Bhutto and her party. From within her party, her own ministers were sniping at her. It is a very difficult time. It is a very difficult time. वो ही थी एक बहादुर औरत जो कि वो कर गई पूरे 2-2.5 साल. नहीं तो they'd left no stone unturned to upset her standing. So much so that this man Ghulam Hussain, who is now on, the great expert, he took out a rag of a paper out of main market Gulberg, और उसका काम ही था बीबी को गाली निकालना. बहुत मुश्किल था यार, बहुत मुश्किल था. ट्रेटर की बेटी, वो बंदा जो आपको छुड़वा के लाया इस पाकिस्तान से, वो ट्रेटर बन गया. उसकी बीवी और उसकी बच्ची ऑटोमेटिकली ट्रेटर बन गई, क्योंकि वो पंजाबन, सीधी बात थी, पंजाबी नहीं थी, सिंधी थी. तो these are great problems that we went through. We could have done so much better, really. पर ये एक हमें चीज नहीं छोड़ती. सर, इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, आपने ये कहा कि देयर आर मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर, और जिसे मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि स्टेट अबव द स्टेट और स्टेट विद इन द स्टेट, और इस किस्म के एक्सप्रेशन इस्तेमाल होते हैं. और वो ये भी फेमस है कि कई जगह पे कोट किया गया है, इंक्लूडिंग माय ओन पब्लिकेशन, कि there are countries which have armies. In Pakistan, army has a country. तो इस सिलसिले में अब इस वक्त जो कह रहे हैं कि न्यूट्रल हो गए हैं, और ये जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, उन्होंने जो पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर की जो ट्रेडिशन एक एस्टेब्लिश हुई थी, एक ही दफा हुई 7.5 डेकेड्स में, कि एक सिविलियन गवर्नमेंट गई है, दूसरी सिविलियन गवर्नमेंट आ गई विदाउट ओवर्ट इंटरफेरेंस और पेट्रोनेज फ्रॉम द वर्दी वाला. तो उसके बाद जो है अब जो हाइब्रिड सिस्टम लेकर आए, और वो अब कोलैप्स कर रहा है, ये सबको नजर आ रहा है, खुद उनको भी नजर आ रहा है. तो सर, अब कुछ उम्मीद है कि कुछ सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, या इट्स जस्ट टेम्परेरी अफेयर एंड देयर विल बी बैक अगेन? It's a question of how much blame the deep state is willing to take for where the country finds itself. They can, when you go from a 5.8 growth rate to a 0.2 or 0.4 or whatever it is, I don't know. तो क्या बनेगा जब दवाइयाँ जो ₹1 की दवाई थी वो आज ₹8 की है. डॉलर जो 100 रिमाइंड मी 120 था या 110? हाँ जी, 100, लिटिल ओवर 100 था जी. लिटिल ओवर 100 था. वो आज 176 है, क्या है? I forget. So when this happens, when people can't eat 2 square meals a day, then it is time to deflect the blame somewhere else. तो मैं तो कब से लिख रहा हूँ, and since I've been writing it, I have no problem saying it. I've been tweeting since I haven't written an article for such a long time because nobody will print me. So I've been the virtual articles, my threads on Twitter. तो उसमें मैंने यही हमेशा कहा है GHQ को देखिए, यू आर आवर आर्मी. मैंने भी 11 साल उसमें नौकरी की है, और बड़ी अच्छी तरह नौकरी की है. ये सारा गन जो है, ये गेट नंबर 1 GHQ, जहाँ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंटर करता है, ये उसके बाहर अंबार लगा हुआ है गंद का, गार्बेज का. एवरीबॉडी नोज, या जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, एवरीबॉडी इन चार्लीज आंट नोज हु कॉल्स द शॉट्स. किसके चीजें चलती हैं. इमरान खान जितनी मर्जी बड़क मार ले, एवरीबॉडी नोज के काम वहां से ही आता है, GHQ ISI. नाउ
अभी ये पीछे जो हुआ था कि जनरल फैज इज कॉलिंग पॉलिटिशियंस कि आप इसमें हिस्सा ना लें तरीके अदम एतमाद पर, लिटरली उन्होंने नाम लेके कहा है। और अगर नाम लेके कहा है तो वो एक रिस्पॉन्सिबल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है मरियम औरंगजेब, वो ऐसे नाम कभी ना लेती और अप्रूवल से दिया होगा जो लीडरशिप है पीएमएलएन की। तो दीज आर अनटेनेबल थिंग्स, दे कंप्लीटली अनटेनेबल कि तुम डीजीआई, अब जब डीजीआईएसआई था तो वो जज साहब जो है जिनका केस अभी आने वाला है सुप्रीम कोर्ट के सामने, उनके घर जाके ये डीजीआईएसआई कहता है कि जी मरियम नवाज को और नवाज शरीफ को आप ना छोड़ना जब तक इलेक्शन खत्म नहीं होते। यानी ये कोई बात है? वी आर रियली, क्या मैं कहूँ, वाइल्ड लैंड्स भी नहीं है, जंगल भी नहीं है, जंगल में भी कोई ना कोई कानून होता है। ये तो वो, मुझे तो सिर्फ ये वो ही याद आता है, वो गलिवर्स ट्रेवल्स में जब गलिवर लिलीपुट से वापस आ रहा होता है तो क्योंकि वो सारे लिलीपुट छोटे छोटे सारे थे, समुद्र भी छोटे थे, तो समुद्र में से गुजर रहा होता है, यहाँ तक पानी होता है उसके, यहाँ तक सर उसका भारी होता है, इज वॉकिंग ऑन द सी फ्लोर एंड ही कम्स अक्रॉस एन आइलैंड जिसपे एक कोई अजूबा एक चीज रहती थी जिसका नाम उसने डाल दिया याहूज। तो वो याहूज ना ना इंसान थे और ना जानवर, सो दे वर अ थिंग इन बिटवीन which had neither the good qualities of an animal nor the better qualities of human being. So दोनों की जो worst properties थी वो इस चीज में थी, तो उसका नाम उसने डाल दिया याहू। तो मुझे तो यही लगता है, वी आर इन नेशन ऑफ याहूज, nobody knows what's going on। कल देखिए पेशावर में क्या हुआ, एंड देन दे हैव द गॉल टू टेल अस आईएस ने किया। व्हाट इज आईएस भाई? आईएस कौन है? आईएस तो वो ही है ना जिनको तालिबान ने, अफगान तालिबान ने दर्जनों के हिसाब से गनी के जेलों में से निकाला, वो ही है ना। टीटीपी कौन है? ये वो ही है ना जिनको अफगान तालिबान ने अफगान जेलों से, जहां अशरफ गनी ने बंद किए हुए थे, उनको निकाला। कौन अटैक कर रहा है पाकिस्तान को आज? यानी नौबत ये आ गई है कि तालिबान जो कि हमने बनाए और वो कहते हैं आपने बनाए, क्वेटा शूरा कहां था? क्वेटा में था। वो ही तालिबान, हम उनकी मिन्नत कर रहे हैं कि जी ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है इनसे हमारी जान छुड़ा दें। यानी दिस इज गोइंग नोवेयर, दिस इज गोइंग नोवेयर। वी आर जस्ट मेकिंग एब्सोल्यूट फूल्स ऑफ आवरसेल्व्स एंड वीकनिंग द कंट्री एज वी गो अलोंग। इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन, जो राय जी। फैज हमीद वाला जो सिचुएशन है, ऐसे पहले कोई लेफ्टिनेंट जनरल, कोई आईएसआई का चीफ ऐसा फ्लैम्बॉयंट रहा है कि मतलब कि हर दफा जो है उसकी तस्वीरें हर जगह आ रही हैं, ही इज बिहेविंग लाइक पॉलिटिकल फिगर। जब फेयरवेल उसका ट्रांसफर हुआ है पेशावर, तो ही वेंट अराउंड सो मेनी प्लेसेस, फॉरेन ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, फेयरवेल कॉल्स हो रही हैं, उसको गिफ्ट दिए जा रहे हैं, उसको जो है वो तस्वीरें उसकी अखबारों में आ रही हैं। मतलब आई डोंट रिमेंबर एनीबडी डूइंग दिस। मिलिट्री से कोई भी ऐसा नहीं गया, neither the chief और आयशा के तो सवाल ही पैदा नहीं होता कोई ऐसा करे। डू यू रिमेंबर anyone like this? It's been a what should I say? It's been a regular, not regular. What is the word I want? Gradual descent. Gradual descent. नीचे आना. It's been happening. It's been happening. Do you remember when those posters came out? Raheel Sharif जाने की बात ना करो, or something like that. Then things like who is the bigger patriot? Is it Raheel Sharif or that other that ISI chap with the low forehead? क्या नाम था? ज़हूरुल इस्लाम or what? ज़हीरुल इस्लाम. उनकी तस्वीरें आती रही हैं. There have been demonstrations in favor of the ISI. We don't see any demonstrations in the US in favor of the CIA, nor do we see any in Israel for RAW, or in India so in Israel for Mossad, or in India for RAW, nor in the UK for MI5 and MI6. तो हम कोई अजूबे ही लोग हैं, really. And this whole thing began to go wrong. Never forget, by the granddaddy of martial laws, as I call him, Ayub Khan. That is where things began to go wrong.
That is where, when there was no corruption in the country, none or very little, it was institutionalized. हाई When लेवल his पे तो उस sons, समय करप्शन थी नहीं. There was ministers, governors, governor बिल्कुल नहीं थी. general, president. Not there was not a single case of financial corruption at that time. It started with Absolutely, Ayub Khan. absolutely, absolutely. Not one, Ayub Khan not was one. the first. Yes, yes. Was Khwaja Nazuddin corrupt? No. H.S. Surovardi corrupt? No. No, No, it it was all unknown to started. them. Absolutely, absolutely, I agree with you. It started with him, and it started. I mean, हम तो रहते हैं वाह towards the north of Pakistan, which is not far from Haripur, and his village Rehana is not far from Haripur. तो वहां से तो जो वहां से माउंटेन स्ट्रीम्स नीचे आती थी, दे यूज्ड टू ब्रिंग ग्रेवल विद देम, ग्रेवल, बाजरी. हाँ. तो बाजरी का ठेका भी इसके बेटों के पास था. यानी दे वुड पुट ए चौकीदार देयर, और उन चौकीदार क्या होता था, नोबडी हैड वेपन्स, तो एक डंडा ले एक बंदा खड़ा होता था, हाँ. एंड एवरी ट्रक हैड टू पे हिम 4 आने, 4 आने. ट्रक भर लो और 4 आने देते जाओ खान के लिए. तो दोस यूज्ड टू गो टू अयूब खान सन्स. वो उन दिनों ये होते थे permits. You have to have permits, route permits. Route permits, yeah. That was a big business. Yeah. So there was this Faisalabad bus company, आज भी है, क्या नाम है उसका, कोहिस्तान बस कंपनी. उसमें हर रुपए के पीछे 4 इसके बेटों के थे. यानी every rupee they earned, or they sold the ticket, 4 आने used to go to them. ये तो तमाशा बना हुआ था. Everybody knows that. Everybody knows that. The largest house in DHA Karachi, the largest house was Gauriyub's. Huge. I don't know how many canals or acres. Right on the hill. Right on the hill. Do you have hope that it can be corrected or it can be tamed, if not reversed altogether? इस वक्त जो सिचुएशन है, जो वोट को इज्जत दो के नारा जो लग रहा है, हाइब्रिड सिस्टम का कोलैप्स कर गया है, तो डू यू हैव होप दैट सिचुएशन कुछ बेहतर हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो सकती है, सिचुएशन आइन की जो है वो बहाली हो सकती है, आइन के तहत गवर्नमेंट बन सकती है, सिविलियन सुप्रेमेसी अगर उस तरह ना भी हो जिस तरह आइन में लिखा हुआ, कम से कम वो दे कैन कम एंड गो ऑन देयर ओन. तो ये कुछ सूरत हाल बनती नजर आती है आपको? देखिए, आफ्टर व्हाट द कंट्री इज गोइंग, तो यही कह सकता हूं, आफ्टर व्हाट द कंट्री इज गॉन थ्रू, अगर अभी तक सब लोगों को समझ नहीं आई, तो फिर देयर इज नो होप. देयर जस्ट इजंट एनी होप. हाँ, व्हेन दे सिंक इन देयर ओन डर्ट, जो पैदा की है इन्होंने, अभी तक यहां तक तो आ गई है. Only the nose and the mouth is above this the filth. यहाँ तक आई हुई है. Let it grow. Then maybe there is a chance. But as I've said repeatedly, there has to be stock taking by themselves, and there has to be a new charter of human rights, if you like, or a new social contract. New social contract, yeah, that's the thing. With the people of Pakistan, by the establishment. मैं तो उस दिन ट्वीट किया that they must take another oath, since they don't seem to think very much of the oath that they took earlier as cadets. They must take another oath to say that they will never ever step into politics, because they know nothing of it, nothing whatsoever. It's people who sorry. They make mess of it. अच्छा, एक बात मैं आपसे, सरदार शौकत अली साहब ने जिक्र किया है अपनी किताब में कि आप जो आपके बुजुर्ग आपके अजीज भी हैं, तो कि उन्होंने की पर्सनल प्रॉपर्टी जो थी वो अयूब खान ने जबरदस्ती उनसे ली, और वो तो वुड यू लाइक टू से एनीथिंग अबाउट दैट? जी, वो जो वाह का पहाड़ है, which is now being destroyed, everybody is mining things, even my own family is ruining it. वो जो पहाड़ था वो लीज पे दिया गया था एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी को, नाउ कॉल्ड अस्करी सीमेंट.
And many were families, हमारी family में से, many of us were living on that royalty. And remember, war has this thing of, uh, I have defied the odds so far, thank heavens. But war has had this thing, and of course now there are so many tikas and duayas on which we live. But in the old days, war ki median age for men was about 38, say 38. At 38, 40, they would depart this earth. So they were mainly widows. So उनके लिए ये था दिस रॉयल्टी, उस पर वो गुजार करते थे. तो रॉयल्टी क्या थी उस वक्त यार? 350, किसी को 400, किसी को 600, किसी को 150. दैट वाज इट. So this is interesting. This is interesting. So when Sardar Shaukat Hayat opposed Malik Amir Kalabagh and fought an election from Camelpur and won, they broke Wa from Camelpur or Attak and attached it with Pindi so that उसका जो हल्का है वो टूट जाएगा. There's another story, of course. Later, then his son, my cousin Sikandar Hayat, began to fight elections from where is Sheikh Rashid's farm where he used to train those terrorists? Fateh Jang. Fateh Jang में जो हल्का था उसमें सिकंदर याद जीता और सरदार कोट के ग्रैंडसन को बीट किया उसने. सरदार कोट इज a huge landowner, 15 million times bigger than any of us. Anyway, so going back to Ayub Khan, one of our uncles, as it happened, Brigadier Nawazish Ali from Wa, he was married into Talokar. Talokar is a village off Haripur, and unke अच्छे मरासिम थे with the Ayub Khan family, my family there. So he was a brigadier, and Ayub Khan took him on as his military secretary. So one day, they were driving from Rehana to Pindi. उन दोनों ये बीच वाली सड़क नहीं थी, तो they would come via Hassan Abdal, around the curve and then get on the GT road. So Brigadier Nawazish Ali used to say that whenever Ayub Khan passes this hill which जो लीस वाली, he would say in his Punjabi, ha Nawazish, bon dil dukh le, शौकत वडे नाल ना करेगा ते मैं भी ये रॉयल्टी बंद ना करा. I mean, just look at the man. Shaukat Hayat was in his own right a millionaire. He's a big political leader. उसने जो किया तुम्हारे साथ किया भाई, जो और बच्चे जो यतीम हैं और जो विडोज हैं उनका क्यों बात कर रहे हो? So there you are. I mean, there's one thing that shows you his smallness, if you like. Are you there, Raiji? तो उनका जो सॉरी, वो शफीक साहब का फोन था एंड आई वाज लिटिल डिस्ट्रैक्टेड. अच्छा. तो उनका जो शाह से जो बात हुई है फॉरेन ऑफिस वालों से भी, और उसके बाद मुझे वो ये कह रहे हैं कि हम वी वांट टू स्टे अवे,
और उस पे जो कॉन्सिक्वेंसेस की बात हुई है तो मुनीर अकरम ने कहा कि यस वी आर अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस एंड वी हैव मेड अ डिसीजन सो वी डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व और 35 countries have abstained, so we have also abstained. So इस पे अब क्या, where we are heading? Are we confused? Are we on a clear policy? Raji, I missed the earlier part of your question. I didn't hear the earlier part. किसने क्या कहा है? Please say it again. Oh, sorry, yeah. वो डॉन में खबर है, डॉन में कि यूएस warns Pakistan on the consequences of war in Ukraine. हाँ जी. हेडलाइन में वर्ड वॉर है, जो टेक्स्ट है न्यूज का, उसमें है द स्टेट डिपार्टमेंट सेज दैट वी हैव ब्रीफ्ड पाकिस्तान अबाउट द रीजनल एंड ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर इन यूक्रेन। तो उसमें वॉर का लफ्ज उसमें नहीं है जो रिपोर्ट किया है। फिर मुनीर अकरम से बात हुई है, मुनीर अकरम ने कहा कि यस वी आर अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज एंड वी हैव मेड अ डिसीजन टू स्टे आउट ऑफ इट एंड जो है डिप्लोमेसी जो है उसको चांस मिलना चाहिए, पीस रेस्टोर होना चाहिए। और स्पीच में उसने कहा था टेरिटोरियल एंड सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ यूक्रेन शुड बी रिस्पेक्टेड, लेकिन जो अखबार में स्टेटमेंट है उसमें उसने ये बात नहीं कही है। तो अब जो पीटीआई वाले हैं वो जो है वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और उसमें पार्टी की तरफ से नहीं, लेकिन जो उनका ट्रोल ब्रिगेड सोशल मीडिया जो है उस पे जो कुछ आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि बिकॉज Imran Khan has taken a very bold step of distancing himself from American imperialism, quote unquote. तो इसकी वजह से जो है वो जो अपोजिशन वाले हैं वो उनको अमेरिका जो है वो एनकरेज कर रहा है कि इसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएं और ये करें वो करें। तो इस पे आप इन दिस होल सिनेरियो आपकी क्या राय है? नहीं, अमेरिका वाले डोंट हैव टू टेल अस टू वो नो कॉन्फिडेंस लाए। देयर इज अ स्टोरी जस्ट नाउ, मैं देख रहा हूँ, वो मुईद क्या नाम है उसका, डॉक्टर मुईद व्हाटएवर हिज नेम इज। जी जी जी, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है हमारे। नहीं, जर्नलिस्ट अच्छा, वो जिसने अपने वालिद के अंगूठे लगाए थे। हाँ याद मुझे है? नाम नहीं याद आ रहा। मुईद हो, उसकी कहानी में भी देख रहा हूँ, इट्स ऑन दिस थिंग दैट अमेरिका हैज सेड दिस दैट द अदर। I don't think they'd go that far anyway कि वो कहें कि आप इसको उतारें। However, what they feel about us is absolutely clear। ये मुईद यूसुफ की जो विजिट कॉल ऑफ हुई है यूके की, ये there's a new story in the news saying the British government on Friday unilaterally called off visit of National Security Advisor NSA Muid Yusuf without assigning any reason. जी, According to the media report, the NSA was scheduled to visit the United, etc., etc. Pakistan expresses dismay over the statement, terming it undiplomatic and express. So there are moves going on, and Pakistan will certainly pay the price for going against the world at this dangerous time. लेकिन सर ये अनफेयर नहीं है ऑन द पार्ट ऑफ द वेस्ट कि जब इंडिया एब्सटेन कर रहा है और पाकिस्तान भी एब्सटेन कर रहा है, ईरान एब्सटेन कर रहा है, 35 कंट्रीज, तो पाकिस्तान पे प्रेशर क्यों डाला जा रहा है, इंडिया पे प्रेशर क्यों नहीं डालते? क्योंकि पाकिस्तान उनसे पैसे खाता है और इंडिया नहीं खाता। अच्छा, सिंपल इज दैट। देखे ना हर एक का। जी जी पाकिस्तान जी सर, नहीं मैं आपको देख रहा हूँ और हम आपको विल टेक यू। हाँ हाँ जी बिल्कुल, जी 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 जी, थैंक यू। सॉरी सर, वो हमारे पार्टिसिपेंट है, वो उनका कुछ प्रॉब्लम हो रहा था फोन का और अच्छा, नहीं इंटरनेट पर मैं तो ये कह रहा हूँ जी सर। कि इंडिया हमारी तरह बेवकूफी भी तो नहीं करता ना। इंडिया डज नॉट रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड्स जैसे हम करते हैं जी, कि खरगोश के साथ भी भागो और उसको चेस भी करो। हाँ हाँ, बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, lie all the time, whether it's Quetta Shura or anything else. So ये तो नहीं चलेगा ना, ये तो नहीं चलेगा।
हाँ कि वो अच्छा अभी यहाँ क्या बता रहे हैं, then we lie and we don't say what's happened. Suddenly, oh, he's called off his visit, he will now speak on Zoom. Well, say it's been called off. Let the people know. जी So there's no doubt in my mind कि इसमें we will pay a price and we'll pay a heavy price. And दूसरा आप देखो राय जी, show me one country, one, just one, that is a sincere friend of Pakistan. एक बता दो. मुश्किल है. हर तरफ गंद किया हुआ है. मैंने सऊदियों को नाराज किया, तो तुर्कों को कहा कि हम आपके साथ जाएंगे मलेशिया. फिर जब उन्होंने घूरा सऊदियों ने, तुर्कों को कह दिया हम नहीं जा रहे. दोनों के साथ खराब, मलेशिया के साथ खराब. दैट इज वेरी चाइल्डिश, इमेच्योर किस्म की चीजें हम लोग कर रहे हैं. It's not really Chinese, it's downright foolish. I mean, when you have somebody with not the mental capacity to head a country, why do you rig him into power? Whose fault was that? तभी तो ये खुद चाह रहे हैं, अभी इनमें से खुद चाह रहे हैं कि जाए. बट मैं इसके भी खिलाफ इसलिए हूं कि जो किसी ने जाना है वो पॉलिटिकली जाए. जी, when I hear commentators saying जी वहां से फोन आ गया तो एमक्यूएम भी आ जाएगी, तो वहां से फोन आ गया तो पीएमएलक्यू, कहां से फोन आ गया? That's really very sad and unfortunate. सर मैं अब हमारे कर्नल मकबूल साहब जो हैं वो ऑन स्ट्रीम है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कर्नल साहब के आपसे कुछ सवाल पूछ लें और वो आई टेक लिटिल ब्रेक. तो कर्नल साहब, इट्स ओवर टू यू. सबसे पहले कर्नल साहब को सलाम. सर अस्सलाम वालेकुम. मैं सॉरी ज़रा थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया. हमारी एक और छोटी सी मीटिंग थी, इंटरफेथ मीटिंग होती है हमारी वीकेंड के ऊपर इन आवर इस्लामिक सेंटर. nice. तो वहाँ से काफ़ी लोगों के साथ गपशप हुई, वहाँ पे क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, और इन लोगों के भी व्यूज़ का पता चला कि क्या सोच रहे हैं ये. माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा अभी तक जो आपकी प्रेजेंटेशन है और आपसे बहुत कुछ सीखा है. सर ये बताइए कि जो प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर जिस तरह पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा एक कह लीजिए कि चैलेंज दरपेश है आगे, एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज है, एक इकोनॉमिक चैलेंज है, एक इंटरनल सिक्योरिटी का चैलेंज है, जिस तरह की सारी चीज़ें रोज़ाना बेसिस के ऊपर डेवलप हो रही हैं. कल के पेशावर के इंसिडेंट्स को मैं यहाँ पे रेफ़र कर रहा हूँ. आपके ख्याल में कोई इसका स्टिच इन टाइम किस्म का कोई डिप्लोमेटिक सोल्यूशन, कोई इंटरनल सिक्योरिटी का सोल्यूशन इस गवर्नमेंट के पास पॉसिबली है? कर्नल साहब, मैंने बहुत दिन पहले 8, 10, 12 साल की बात होगी, जब वो बहुत फौज के अंदर से मेरे पे बड़े ताने लगते थे कि ये ट्रेटर है, फलाना है, ढिमकाना है. तो उस वक्त मैं ये कहा करता था अपनी आईएसआई को कि खुदारा हमें भी पाकिस्तानी समझो. नंबर 2, ये पाकिस्तान का दफा सिर्फ फौज और आईएसआई का नहीं है, हमारा भी है, क्योंकि हमारा भी मुल्क है. देखिए कर्नल साहब, जो इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन है उसमें पहले आते हैं. आप देखें ये ऑपरेट कैसे करते हैं. एक टाइम था कि चकवाल से एक कोई रिटायर्ड हवलदार जिसने एक अपना मज़ार बुजूर बना रखा था, वो पीर बन गया था. उसका नाम मुझे इस वक्त आ नहीं रहा, बहुत लिखा है मैंने उसके ऊपर. तो जब भी बेनज़ीर की हुकूमत को ये हिलाना चाहते थे, वो 8-10 ट्रक लेके आ जाता था रावलपिंडी, इस्लामाबाद, और बैठ जाता था. अभी मुझे नाम याद आ जाएगा उसका. और फिर उनको वापस भेज दिया, कुछ दिनों के बाद वापस भेज देते थे. फिर ये आपका भी जो निकला है ये तहरीक-ए-लिबास पाकिस्तान, जो कह रहा है कि फ्रेंच एम्बेसडर को निकाल दो वगैरह वगैरह, जो उन्होंने तमाशा किया नवाज शरीफ की हुकूमत के साथ. पैसे किसने बांटे? तस्वीरें तो मौजूद है ना. इट इज द मेजर जनरल ऑफ द रेंजर्स इन यूनिफॉर्म. तालिबान का अव्वल बनाया किसने? 2
क्वेटा में रखा किसने, कितने सालों के लिए? एंड इफ द होल वर्ल्ड न्यू इट, वो ही तालिबान जिन्होंने आके एपीएस पे हमारे बच्चे मारे, और वो भी फौजियों के, ज्यादातर फौजियों के। जो सिविलियन बेचारों के माँ बाप जो थे उन पे भी उतने दिल टूटता है। मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि यानी अपने लोग कैंटोनमेंट के अंदर कोर कमांडर के घर से 1.5 या 2 किलोमीटर दूर है वो स्कूल। कैसे हो गया ये सारा? एहसानुल्लाह खान उनका स्पोक्स पर जो पकड़ा हुआ था, वो गायब हो जाता है अपने सेफ हाउस से इन यूनिवर्सिटी टाउन, ऊबर में बैठ के। कैसे? So these are all wheels within wheels. And I have repeatedly said कि खुदा का वास्ता है, नॉन स्टेट एक्टर्स को इस्तेमाल ना करें आप, स्पेशली, एंड वी नो इट, दे डू इट इन कश्मीर। जो मेरे कश्मीरी दोस्त हैं, आखिर हमारे कश्मीर में भी तो दोस्त, आपने कश्मीर में भी दोस्त है ना, वो बताते हैं कि आप देखें ये जो जिहादी करते क्या, डाले ले जाएंगे अपने बाजार में, दुकानदारों को कहेंगे चलो इसमें डालो 20 बोरी आटा, 3 बोरी चीनी, इतनी फलानी चाय, दालें, ये वो सब्जियां, ये तुम्हारा जिहाद की कंट्रीब्यूशन। दे डूइंग इट टू ऑर्डिनरी पीपल। ये पीछे रायट नहीं हो गया था फौज के खिलाफ इन कोटली और समवेयर, जब पत्थर मारे लोगों ने? तो these things don't work. And you know, as long as you use non-state actors, they will do what they're doing here also. और ये पहले बात हो रही थी, आप तशरीफ फरमा नहीं थे उस वक्त, कि ये जो ब्लास्ट हुआ है किस्साखानी में, पेशावर में, जिसमें पता नहीं मेरे ख्याल 70 अभी डेथ, 70 से ज्यादा हो गए, 70 से ज्यादा हो गए। तो कल साहब देखें ना, 70 अगर डेथ टोल है, तो आप इमेजिन करें कि ये जो बॉल बेरिंग वाले होते हैं, ये सुसाइड बॉम्ब्स, कितनों और को ये तबाह करते हैं, कितनों की आंखें नहीं होंगी, कितनों की लातें नहीं होंगी, हाथ नहीं होंगे। तो ये कौन थे? हम कहते हैं जी ग्लिबली भी से दे वर दी आईएस। भाई व्हाट इज आईएस, प्लीज टेल मी? इस्लामिक स्टेट है ना? जी बिल्कुल। इस्लामिक स्टेट तो मैं 7 साल पहले आर्टिकल लिखा था कि मेरे गांव वाह में गराजों के ऊपर लिखा हुआ है आईएस इज हियर। आईएस आ रहा है, और नीचे इंग्लिश की ट्रांसलेशन आईएस इज हियर। 7 साल पहले मेरा आर्टिकल। वाह विलेज, और वाह विलेज कहां है? पीओएफ से 3 मील दूर। पीएफ की मिसाइल फैक्ट्री जो है हजारा रोड के ऊपर, उससे कोई 12 मील दूर, 13 मील दूर। कामरे से 18 मील दूर, वहां उधर है आईएसएस हेयर के लगे हुए बाहर। व्हाई डोंट यू नो? अगर आप दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पाई एजेंसी है, तो व्हाई डोंट यू नो हु दिस पीपल आर? जब आपने बगले बजाई कि गनी भाग गया है, तो उसके अगले दिन तालिबान ने क्या किया? टीटीपी के हजारों कैदी जो उसने बंद करके रखे थे, उनको छोड़ दिया। आज कौन मार रहा है हमारे सोल्जर्स को? किसके पास हम जा रहे हैं कि खुदा का वास्ता मेरी जान छुड़ा दो टीटीपी से? वो ही तालिबान जिन्होंने छोड़े जेल से। राइट। ये आईएस को किसने छोड़ा? आईएस को किसने छोड़ा? तालिबान ने। और फिर कहते हैं कि जी आईएस और तालिबान एक नहीं है। आई हैव ऑलवेज हेल्ड that all these terrorists are tied at the hip, जैसे कहते हैं अंग्रेजी। They are tied at the hip. They are all one and the same. सर आपने शुरू में बात की, सॉरी सर, आपने शुरू में बात की थी डीप स्टेट की। देखिए, ये तो हमें पता है कि डीप स्टेट हमारे ऊपर मुसल्लत हो चुकी है। ये हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम को ओवरराइड करती है हर तरह से, और गवर्नेंस के अंदर जो भी इनकी डिक्टेशंस हैं और जिस तरह की भी इनकी आई वुड से डोमिनेंस है, वो with the changing day, every day I would call it, it is increasing. तो दूसरी तरफ से आप देखें तो पॉलिटिकल साइड जो है हमारी, वो इतनी ज्यादा वीक है। जो पॉलिटिकल पावर जिसे कहते हैं,
उसका जो कॉन्सेप्ट एक बनता है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, अगर उसको आप डिटरमिन करें जी कि ये पॉलिटिकल पावर जो है इट सीक्स स्ट्रेंथ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सेरेमोनियल डॉक्यूमेंट है, अवेलेबल है, इट्स ऑन फाइल, ऑल राइट, और इसका कस्टोडियन सो कॉल्ड द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी बैठा हुआ है, जो कि वर्चुअली एक पपेट है। ये सारी चीजों के साथ ये स्टेट फिर चल किस तरह रही है? मैं तो ये हैरान हूं कि अगर आप देखें तो पॉलिटिकल साइड जो है ना तो उसके कंट्रोल में कुछ है। जब आईएसपीआर आता है वो कहता है जी हमारी तो कोई ताल्लुक ही नहीं है पॉलिटिक्स के साथ। ये किसको ब्लफ कर रही है, किसके साथ झूठ बोल रही है डीप स्टेट कह लीजिए, या हमारी जो पॉलिटिकल पावर है? क्या किसी और दुनिया के बहुत से ममालिक हैं जहाँ पे मिलिट्री रूल है, हमने अफ्रीका के अंदर भी देखा, एशिया के मुल्कों में भी देखा, लेकिन चलिए कोई डिस्पॉटिज्म हो जाए वहां पे, कोई एक एक सही कह लीजिए कि एक रिस्टॉक जो जो ऑटोक्रेसी हो जाए, किसी तरह से कंट्री का कंट्रोल तो किसी तरह से संभालें। ना इनके पास कंट्री का इकोनॉमिक कंट्रोल है, ना इनके पास सिक्योरिटी कंट्रोल है। धमाके शुरू हो जाते हैं, उसके बाद फिर डाके शुरू हो जाते हैं। देखा जाता है तो हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जा रहा होता है इंग्लैंड, तो उसका एकदम दौरा जो है वो होस्ट कंट्री जो है या जो भी तो उसको उसको कैंसिल कर देता है। तो ये क्या है, कितने दिन चलेगा ये सारा कुछ? ऐसे पहले भी आपने फरमाया, आपने आपने इसको एनालाइज किया सिचुएशन को। जी सर, ओवर टू यू सर, कामरान साहब। मैं कल सबसे सिर्फ ये कहूंगा कि सर आपको किसने कहा है कि चल रहा है, बात चल रही है? किसने? सर क्यों अपरेंटली तो बदगुमानी यही है लग रहा है आपके? जिस तरह मतलब है भैड़ी नहीं तरह चल रही चल ना। रहा है। नहीं चल रहा है, it's crawling along and it's crawling along only because there are some few good people in government and I'm talking of bureaucrats। उनमें भी अच्छे लोग हैं, फौज में भी बड़े अच्छे लोग हैं, ये वो थोड़े से जो लोग हैं उनकी वजह से चल रहा है, अदरवाइज इट्स नोवेयर। देखिए, जो आपने लंबा सवाल था, आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ internal situation, though I think I've said already. I mean, if you use non-state actors, they will act on their own and do what they did, such as in the APS or in the Imam Bargah. अच्छा, नई बात सुने, वो नई नई इंस्ट्रक्शन ये है कि इमाम बारगाह नहीं आप कह सकते, आप उसे जामा मस्जिद कहेंगे। ये कोई बात है करने वाली? हमारे शिये भाई बहन हमेशा से इमाम बारगाह हम सुनते आ रहे हैं, अभी नहीं जी नहीं, वो नहीं कह सकते आप। यू हैव टू, as if just by changing a word you can divert people's attention. This can never happen. एक बड़ी जरूरी बात जो आपने की है ना कि political parties don't seem to have the wherewithal or the courage or the will or the strength to fight. सर मैं ये अर्ज कर दूं कि अगर यूके में नैब जैसी एक बॉडी होती जो कि आपको कहती जस्ट फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस कि आपके खिलाफ 2 अरब रुपए का करप्शन है, अभी आप प्रूव करें कि नहीं है, एंड अंटिल यू प्रूव इट यू आर इन जेल। आप लाख कहें भाई मेरे पास नहीं है, मेरे बैंक अकाउंट देख लो, मेरे घर देख लो, कहां मेरे 2 अरब मेरे पास है भाई, बट नो, nobody will listen to you. There is no court in Pakistan, high or supreme, that will give you relief. राणा सनावरा के साथ क्या हुआ? हेरोइन निकल आई जी, हेरोइन निकल आई, खुदा को जान देनी है, नथिंग, जीरो। हाउ लॉन्ग वाज ही इन जेल? 9 months। शायद खाकान अब्बासी के साथ क्या हुआ? वो जी LNG फलाना जी, उसने कहा टीवी में 10 दफा आके कहा कि ये नायब वालों को ये भी नहीं पता कि LNG और जो दूसरा होता है, व्हाट इज द अदर वन कॉल्ड, राय जी, एक तो लिक्विड नेचुरल गैस होती है ना, सीएनजी, थैंक यू, सीएनजी, एलएनजी और सीएनजी में फर्क क्या है? One is liquid, one is no, gas. Yeah. They don't even know this, and they are questioning the former Prime Minister of Pakistan, and they keep him in jail for 11 months. तो उन्होंने फौजी भर्ती किए हुए हैं टू डील विद व्हाइट कॉलर क्राइम। एग्जैक्टली। तो, अच्छा, दूसरा इसको देखे, मरियम नवाज शरीफ को देखे,
Just because she is Nawaz Sharif's daughter, you pull out a case कि जी आपने दादे ने आपको एक जमीन दी थी, उसका प्रूफ करे। क्या प्रूफ करो भाई? वो मियां मोहम्मद शरीफ तो कब से फौत हो गया, अल्लाह को प्यारे हो गए। और ये कौन नहीं जानता कि इत्तेफाक फाउंड्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है? कौन नहीं जानता? तो अपनी नवासी को वो जमीन देगा तो उसको आप बंद कर दो। मीर शकील और रहमान 9 महीने जेल रहा। क्यों? क्योंकि मीर उनके वालिद खलील रहमान, मीर खलील रहमान साहब, उन्होंने एक प्लॉट दिया नहर के ऊपर, उसके जी कागज फलाने कागज ठीक नहीं। जो ये आपका ANF का मेजर जनरल है, DG ANF, इनकी हालत देखें आप। जब लोगों ने पूछा, जब वो शहरियार अफरीदी ने वो नॉनसेंस बात की, मैंने अल्लाह को जान देनी है और ये सच है, तो लोगों ने जनरल साहब से कहा कि जी कहाँ है प्रूफ? और आगे से हंसता है वो। ही laughs and says हा मिल जाएगा 3 साल हो गए सर, कोई नहीं मिला। सर शफीक साहब हमारे साथ हैं, तो मैं आई वुड रिक्वेस्ट शफीक साहब के आपसे कुछ सवाल पूछ लें। और शफीक साहब, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम जी। ये म्यूटेड है मेरे ख्याल। म्यूट पे हैं। शफीक साहब अनम्यूट करें अपने आप को। जी अस्सलाम वालेकुम जी कामरान साहब, बहुत इट्स एन ऑनर टू बी टॉकिंग टू यू एट दिस प्रोग्राम। सर द ऑनर इज माइन। तो मुझे वो वहाँ की छोटा सी बचपन की बातें याद आ गई कुछ, कि हसन अब्दाल से जब वीकेंड पे हम पिंडी जाते थे, तो वहाँ पे पीर वदाई से जब वापसी होती थी, तो वो बस वाले हमें ऐसा चेक कर देते थे, बच्चे होते थे वैसे भी, कि वो कहते थे कि बाहर से बस जाएगी वहाँ और टेक्सला के अंदर नहीं जाएगी हसन अब्दाल। तो फिर वो वहाँ के अंदर ले जाते थे, वहाँ जाके कहते थे अब सवारियां नहीं, आगे हमें वहाँ में उतार देते थे। फिर कोई बस आती थी तो रात के 10-11 बजे अस्पताल पहुंचते थे। तो वहां की तो बहुत यादें हमें। सर ਅਸੀਂ ਗਾਲੇ में ना ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿੰਗੇ नहीं है, बड़ी देर तो डिंगे। फिर जो टिपिकल लैंग्वेज जो वहां पे हसन के लोग बोलते थे, हसन वैसो, तो हमें हमेशा ही हसन वैसो, तो इट वाज अ गुड टाइम ओवर देयर। हसन नहीं, हसोड़ हसन वैसो जी, हसन वैसो। फिर वो ख्वाजा ग्लास फैक्ट्री होती थी, जहां तक वो हमारे एडिटर जो थे, कैप्टन होते थे एडिटर, तो वो हसन अब्दाल से ख्वाजा ग्लास फैक्ट्री तक सुबह डेली हमारी दौड़ लगाई जाती थी, और वो खुद घोड़े पे होते थे और हमें पैदल उड़ाते थे। आप कौन से साल में थे उधर? 73 जी, 73 to 78। You full 5 years? जी। अच्छा, I was there from 58 to 61। आपके तो कैच पोल थे मेरे ख्याल में, आपके जमाने में कैच पोल ने भर्ती किया था, फिर NA बेग साहब आ गए थे। हमारे तो एनडी हसन साहब थे जी। नहीं, वो तो बहुत बाद में आए थे। हाँ जी, वो तो हमारे जमाने में। हमारे भर्ती करने वाले कैच पोल, then he went away and we got squadron leader NA Beg for a short while, and then Lieutenant Colonel AWE Winlaw, MC। Winlaw, yes। MC जी MC Winlaw, जिसको बड़े भोंडे तरीके से हमारे दोस्त ने ये सारी बातें करनी चाहिए, we should know these things। वो उसने एडमिशन नहीं दी इसके नेफ्यू को, क्या नाम है, नादिर परवेज अच्छा आदमी है, मेरा दोस्त है, सीनियर था मेरे से। आपका कोर्समेट होना चाहिए नादिर परवेज। नहीं सर, नहीं, he was way senior। 3 4 हमारा तो प्लटून कमांडर था सर नादिर परवेज। अच्छा। तो he then was unfair and had him kicked out Winlaw। उसको स्पाई जो लोकल हमारा जो होता है बकवास, he's British spy, उसे बाहर निकाल दो। वेरी फाइन प्रिंसिपल, वेरी। हालांकि 6 केन मैंने खाए में उससे, but he was a very fine principal। हमारा ख्याल था कि एनडी हसन was tough। एनडी हसन साहब तो बहुत ही टफ थे ना, ये बताइए। नहीं, बड़ा टफ है जी। He was very tough। केन्स के तो उस माने में आम रवाज था, केन के तो उस माने में आम रवाज था। I was in लियाकत विंग जी। तो अच्छा, I was औरंगजेब। अच्छा, बिल्कुल राइट नेक्स्ट टू इट। लेकिन आपके जमाने में तो विंग जो थे मैट्रिक तक होती थी, then you go to the next one, but हमारे एक ही हो गया था। So from 8th grade to 12th grade it was the same wing। Okay, औरंगजेब, लियाकत, उमर and Jinnah were 10th class। जी। Iqbal was
first year and Heather was, or the other way second. around. One was first year, one was second year. Okay. जी फरमाइए. जी सॉरी, आपने बात की अभी जो प्रोग्राम के शुरू में भी बात की आपने पावर सेंटर्स की, तो डोंट यू थिंक इन 1951 से अब तक देयर हैज बीन एनी केस, मैं सिविलियन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, जो मिलिट्री होती है तो मिलिट्री होती है, कि देयर इज एब एंड वीन भी पावर जो है वो कभी भी जो है वो शिफ्ट की हुई है, और वी आर स्टिल लिविंग इन द लास्ट 56 बल्कि 70 इयर्स अंडर हाइब्रिड सिस्टम, और जो इस वक्त हाइब्रिड सिस्टम का हाउ द वर्ल्ड सीज पाकिस्तान के हाइब्रिड सिस्टम को, जो ब्लूमबर्ग में भी लिखा गया, वॉल स्ट्रीट में भी, बीबीसी में भी, कि जो हाइब्रिड सिस्टम है बेसिकली दैट्स व्हाट पाकिस्तान's प्रॉब्लम इज. They're exactly right. They're exactly right. So जो आप पुरानी बात कर रहे हैं, I was very young then. So you know, in before 58 तो मैं school, I was 12 years old in 58 when I went to cadet college. तो उससे पहले governance का मुझे I can't, I'm not in a position to say in detail. But all I do know is through family sources and everything else is, as we spoke earlier, that there was no corruption. There was scarcely any corruption. I mean, even in the army, I remember brigadiers going on bicycles to the office. मुझे याद है. Bicycles पे जाते थे. या वैसे मोटरसाइकिल बल्कि वेस्पा स्कूटर होता था. जी. हमने देखा ब्रिगेडियर्स को वेस्पा स्कूटर पे, एट द मोस्ट दे हैव अ स्कूटर, जो वेस्पा का स्कूटर होता था, दैट्स द मोस्ट दे हैव. Exactly. So this came in after Zia ul Haq, actually, if you ask me. Sorry, after Ayub Khan. And then became much worse during Zia's time. But there was a period where the civilian writ worked, and that was Bhutto's time. There was a period where it worked, yes. And there was a period again during Nawaz Sharif's, after the Charter of Democracy. Remember, after the Charter of Democracy, Asif Zardari ने अच्छी भली हुकूमत चलाई थी, except for that one terrible mistake that my friend, God bless his soul, he died a good death, but वो बहुत बड़ी गलती कर गया था when he dismissed Shahbaz Sharif's government in the Punjab in spite of the Charter of Democracy, and then that was restored by the High Court. आपको याद है? Yes, बिल्कुल गवर्नर रूल लगा दिया था जी, अल्लाह उसको जन्नत दे. तो ये दो तीन हिकअप्स थे, otherwise they had come to a good arrangement. देखिए, now that we are talking this, and maybe I've said it before, but it's important to say, पाकिस्तान की जिंदगी में दो सानिये हुए, literally, जिनकी वजह से we really got very badly derailed. One was international, which was Rajiv Gandhi's assassination. Because Rajiv Gandhi, I was PIO, and Rajiv Gandhi visited Pakistan on an overnight visit coming from Russia. He was flying back to Delhi. And he stopped overnight. And Benazir Bibi and he had talks on Siachen. So why I know it so intimately is कि मुझे रात को लेट फोन आता है प्राइम मिनिस्टर का. अच्छा, वो प्रोसीजर ये होता है कि जो विजिटिंग डिग्निटरी है उसको पीआईओ एक एल्बम पेश करता है ऑन हिज डिपार्चर नियर द एरोप्लेन स्टेप्स, और उसमें उसकी जो फोटोग्राफ्स है ना इस विजिट की, वो बीच में लगी होती हैं उसके. तो मुझे रात को फोन आया बीबी का, कोई 12 बजे थे मेरा ख्याल है, तो उन्होंने कहा प्लीज मेक श्योर दैट यू अ पेंटिंग फ्रॉम YL आपको याद है? यूसुफ लोदी जी, बिल्कुल कार्टूनिस्ट, यस, कार्टूनिस्ट, ग्रेट आर्टिस्ट. यस सर. तो उससे याद से वो पकड़ना this painting and bring it to the airport and hand it over to the Indian Prime Minister. I said, okay, Prime Minister. खैर मैं सुबह सवेरे 3-4 बजे गया हूँ, उसको जगाया जाके, मैं किधर है? कहते ये पढ़िए. So it was too late to have it framed. So we just rolled it up and I put a ribbon on it. तो जब मैंने देखी वो, तो उसमें ये था कि foreground में there's Benazir and Rajiv. No, sorry, foreground में एक हिंदू priest, वो बोधी वाला, बोधी नहीं होती उनकी, बोधी वाला priest wearing saffron and a mullah साहब सामने. पीछे
राजीव एंड बेनजीर जरा बड़े उनसे, और उनकी उससे पीछे पहाड़, विच मीन सियाचिन। तो राजीव कह रहा है, या दोनों कह रहे हैं एक दूसरे को, ब्लर्ब जो है वो कह रहा है, लीव देम बिहाइंड, लेट अस क्लाइंब द माउंटेन। Wow, Leave what a them theme. behind. What a Let theme, What a sir. message. Let us. Yeah. Very beautiful thing. So Rajiv What Gandhi a message. literally saw that, and I could see that he was really moved, and so was Benazir, and they were, so confident. Loji, I don't know the time frame, but shortly thereafter he was blown up by the Sri Lankans or whoever they were. And sure enough, some years later, Benazir, he went into a COD with Mr. Nawaz Sharif. Things were going extremely well. I interviewed him for Dawn TV. मेरे पास एक प्रोग्राम होता था इंग्लिश का Dawn TV पे। तो मैंने पूछा मियाँ साहब को, मैंने कहा जी, when she became prime minister, she visited your home and you put a shawl around her shoulders. तो मैंने कहा वो तो भाई भाई पहनाते हैं, brothers give shawls to the sisters. So what happened? What happened? Because I was part of it. I was Benazir's press person, तो हम भी बड़ी बकवास करते थे। तो मैंने कहा, so what happened? Honestly, he got tears in his eyes, and he said, there were other people. Oh. There were other people. They made it life so difficult. फिर उन्होंने कहा, and when I went to sign the Charter of Democracy in London at her house, her two daughters gave me a bouquet each. I will never forget that. So we were on the right path. We were. ये तो कारगिल ने आके सत्यानाश किया सारी ऊट पटांग चीज, ना आपके पास सप्लाई लाइंस, ना रहने की जगह, ना कुछ। यानी आपने सोचो, आप मान ही नहीं रहे कि आपने वो जनरल अजीज मेरा दोस्त है, वी वर कॉलीग्स एट इन्फेंट्री स्कूल, वो जो फोन कॉल करता है मुशर्रफ को चाइना में, which is picked up by the whole world, ये भी इनके देखे जरा सेंस। Doesn't matter we've got them by the ear or we've got them by the what. And these are all mujahid. Mujahid कहाँ, वो तो NLC के बंदे थे यार, the Northern Light Infantry, NLI, yeah. NLI. So it's so sad. It's so utterly sad. ना करने वाली बात भी हो तो आप कर जाते हो। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। मैं तो लाख कहा, अपने आप educate your people, give them good health, give them security. Each one of them will be an F-16. सर आपने किताब लिखी है अभी तक कोई? Yeah, I keep threatening to. I've got a draft. I'm just too lazy. I should put it together. Sir, you need to. You know so much of. You know so मैंने भी कई दफा much. रिक्वेस्ट की आपसे, आप sorry. You know so much political truth, I would say, that has to be brought on record somehow. Thank you. नहीं, मैं कई दफा बात हुई है, ये कहते हैं कि मैं लिख रहा हूँ, फिर जब बात होती है मैंने नहीं लिखा। सर उसको प्लीज कर दीजिए, ये कर्नल साहब की, मेरी और that will be a favor to this nation. ये हमारी पिटीशन है, आप प्लीज उसको लिख दीजिए। तो सर अभी प्रोग्राम खत्म करते हैं, हमने काफी आपका टाइम ले लिया। एक में अगर डॉक्टर साहब अगर लेट मी अगर इजाजत दें मुझे। नहीं प्लीज, नहीं हाँ प्लीज गो अहेड। मैंने उनकी राय लेना चाह रहा था, जो आज करंट सिनेरियो है, खासतौर पे जो हमारे आर्मी चीफ ब्रसल्स गए हुए थे, और जो यूरोपियन यूनियन जो है, और जो GST प्लस का इशू है, हाउ द यूरोपियन यूनियन जो है इट्स लुकिंग एट पाकिस्तान, जो हमारी सिविल राइट्स के था, जो बाकी जो पहले भी उन्होंने वार्न किया है हमें कि अगर इफ यू डोंट करेक्ट योरसेल्फ तो हमें GST प्लस का जो स्टेटस है वो भी खत्म हो सकता है। और अब ये जो रशिया का सिचुएशन हुई है, और जो 21 यूरोपियन एम्बेसडर्स ने लेटर लिखा, was it a normal thing to do for the embassies to write a letter to a foreign ministry of a country like that? और जो यूरोपियन यूनियन है, और क्या हमारे जो फायर फाइटिंग कर रहे हैं आर्मी चीफ साहब, will they bring any results? और इश्यूज तो बहुत है आपसे बात करने के लिए, जो विकास गुराय का केस लंदन में चला है, यानी they're all mixed up into one part के इन सब का जो है हमारे ऊपर क्या असर होने जा रहा है या हो रहा। Absolutely well said, Shafiq साहब. Absolutely well said. No, we will pay a price. We will pay a price, and it is absolutely
anti every diplomatic norm that countries should band together and write a letter to the foreign ministry. But this just shows you what they think of us. And they make it public. I'm sorry? And they make the letter public. Yes, exactly. These things are done totally secretly. Or you just go and meet people. You just go and call on your colleague in that foreign office. This is almost never done. Never. And then don't forget, sir, Switzerland, which is not part of the EU, is a signatory. Japan is a signatory. Australia is a signatory. Ye na bhuliega. So they must have taken permission from their governments to do that. I'm sorry? They must have taken a permission from their governments to do that. उन्हें अपने वहाँ पे तो ambassadors ने नहीं कर दिया ना. नहीं, sir. They were instructed. They were instructed. An ambassador wouldn't dare take a permission like this. उसकी ministry कहती तो सफीर हो, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है. So basically, it's an official stand of their governments. Absolutely. And the fact that the United States is missing from the list tells you even more. They might have said it. They might have said, I mean, you know, I'm sorry, but really, we will pay. We will pay. Allah, dekhe ji, baat sune. This is not, nobody is making political points against the, as I call it, the junta. The junta can go to hell as far as I'm concerned. I am worried about the worker who works in the textile factory. I am worried about the worker who makes Nike shoes. I'm worried about the worker who makes these Levi jeans. उनका क्या बनेगा? If our exports fall, if orders begin to dry up, क्या बनेगा? Do you think ये जो divide है Russia-Ukraine के war की, we will be pulled like sucked into that? We are bound to be. Depending on where it stops. I mean, sense may prevail, but the whole world is bound to be. It's not only. अगर डॉक्टर साहब के पास टाइम है और आपके पास टाइम है, we can talk about where this will end. That's a good topic to talk about. I think that could be a whole next program, I would call it. Yeah, program is definitely because things are not getting better and they're not going to soon get better any soon. But what do you think है जो जनरल साहब का जो यूरोपियन यूनियन के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है, वो एम्बेसडर को बुला के भी मीटिंग्स कर रहे हैं वहाँ पे GHQ में और then event to personal तो सारा कुछ, will it help in any way कि कोई No. The West still has some interest in us because we hold the key to Afghanistan, to the Gand in Afghanistan, जो हमने गंद किया है उस पे. So up to that extent maybe, but इससे आगे कोई बात नहीं जानी. I hope you heard that General Bajo was not allowed to attend the Munich Security Council. They said this Muhid Yusuf is there and there's only one is allowed. तो वो भी है खबरों में. So, sir, एक मैं ये perception भी है कि there is a split between the civilian leadership and the military leadership on siding with the West or siding with China and Russia. So, is there a split in your view? या ये ऐसे ही बात है, they are on the same page at least on this? क्योंकि ये है बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो military leadership है, they want to stay close to the West, they want to stay close to the US. लेकिन इमरान खान जो है, civilian leadership जो है, they are trying to move the other way. So इसमें sir please आप कुछ कहना चाहेंगे? I don't think any of them know their elbow from their knee, to be polite. They're just thrashing about. I think they're just thrashing about. Imran Khan is the biggest hypocrite on God's earth. देखिए जब 9/11 हुआ था, remember, who is the first political leader who went running to Musharraf? Imran Khan. And today he says he was always against that war on terror. Nonsense. अभी जो ट्रंप ने कहा कि जब सुलेमानी की इराक में जो इन्होंने जब उसको असैसिनेट किया है अमेरिका ने, तो यानी what Imran said was, ट्रंप ने ये बात की है कि Imran told me this is one of the happiest day of his life. जब अमेरिका took ना तो जब वो ट्रंप को मिल रहा तो वाचे देखी थी खिली, जैसे हम कहते हैं पंजाबी में, यहाँ से यहाँ तक. No, he's a man of no conscience. सर ये सारा ड्रामा हमने देखा है यहाँ पे. उस दिन क्या हुआ था जिस दिन यहाँ पे एक
वो बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग अटेंड की थी वाशिंगटन डीसी में, हाँ जी, जिसके फाइनेंसिस के ऊपर लोग आज भी आईआरएस को जवाब दे रहे हैं कि वो कब पैसे कहाँ से आए थे और किसने दिए थे। आई नो ऑफ 2 people who are deep in a deep trouble because of that financing। और उसके बाद व्हाइट हाउस के अंदर जो 3 घंटे की मीटिंग हुई थी, और जो वहाँ पे मीटिंग किसी और बात की थी, बाकी लोगों को बाहर निकाल के, और उस वक्त हमारे चीफ साहब गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे थे पेंटागन के अंदर, और इधर दूसरी तरफ ये मीटिंग चल रही थी, और वहाँ पे मोदी साहब के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी व्हाइट हाउस में बैठ के, और एक वहाँ प्लान बना था। थोड़े दिनों के बाद उस प्लान के मुतालिक पता चला जी हाँ ये तो वही प्लान है जिसमें कश्मीर का फैसला कर लिया गया था, और 5 अगस्त हो गया था उसके बाद। तो ये सारी स्टोरीज भी इंशाल्लाह एक दिन बाहर आएंगी, ये साहब क्या कुछ करके गए थे यहाँ पे। और इन्होंने तो बाकायदा उस सारी अपना जो इनको टास्क दिया गया था, उस टास्क का कंप्लीट ओवरव्यू और पूरी उसकी प्रोग्रेस दी थी। ही वाज in fact given an A। His performance was so well, and then the next plan was revealed to him, and unfortunately after that Trump did not make it, and the whole thing got into some kind of a shady situation. And in that shady this is the theory, which is you go to the State Department. The other day we were there for a meeting, and those people, they know it. You talk to them, you ask them these questions, and they don't answer. They just laugh it away. They don't respond to exactly. that. They don't take you seriously enough. Absolutely, Absolutely, yeah. absolutely. नहीं, it's all a show शा तमाशा। मिस्टर ट्रम्प ने भी तो ही वो ये इमरान खान से मीटिंग के बाद हाई प्रोफाइल मीटिंग, और देन ही सेड कि जी वो मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। तो ट्रम्प ने उसके थोड़ी देर से बाद ही स्टार्टेड गोइंग अगेंस्ट पाकिस्तान। से बड़े हार्श किस्म के स्टेटमेंट दिए पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान पे सैंक्शन उसने लगाई हैं, और पाकिस्तान को डबल गेम के लिए उसने जो एक्यूज किया है, तो वो तो उसी के बाद ही खत्म हो गई थी मीटिंग के थोड़ी देर से बाद ही। एग्जैक्टली, बिल्कुल उसका एक काउंटर ऑप्टिक्स बनाया गया था सर बाकायदा, इसकी सारी चीज की इसकी इस सब चीज की एडवांटेज दी गई थी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को जी। वो उसका जो ट्रिप था इतना सक्सेसफुल था कि he had mended all the fences which were broken. Indeed, he did. Yeah. Which is why. I mean, you see, when you have infantile, puerile people like this Mueed Yusuf chap. Absolutely. I mean, अमेरिका में बैठ के कह रहा है कि why isn't Biden calling us? ये कोई बात है कहने वाली? Sir, it's ludicrous. I mean, it's ludicrous. Yeah. And then you say you are sovereign. What sovereign, भाई? क्या sovereign? वो केरी लू का बिल आया तो क्या तमाशा किया इन्होंने हमारे गैरत brigades, as I call them, that Mueed chap and this other awful fellow from Peshawar, what's his name? Salim, what Gul? Some Gul. Yeah, these two. Yeah, these. And so many of them, even some ladies. Oh, हमारी sovereignty क्या तुम्हारी sovereignty? What sovereignty? 50-51 में अगर कोरियन सरप्लस आपके पास ना आता तो आप पैदल फिर रहे होते आपकी फौज। सर मेरे ख्याल वो ना था तो अच्छा था, क्यों हमने फिर 65 और हम नहीं करते। वो जो आ गया ना उसने हमारा दिमाग खराब किया और हमने 65 का पंगा ले लिया। सर मोहित यूसुफ ने अपार्ट फ्रॉम ये कहीं कि हमें फोन क्यों नहीं करते, दूसरी जो इसने ज्यादा इम्पोर्टेंट बात कही थी कि पाकिस्तान हैज अदर ऑप्शन। Exactly. That was something that shook me really. That was really very significant and shocking in fact. आप फोन नहीं करते, if it doesn't call, we have other options. What do they say when you have clowns you'll have a circus, or what is it? What is the word? क्या कहते हैं राय जी उसे? What is that saying? किसको सर? And if you have clowns, if you have clowns, you'll have a circus, yeah, something like that. Anyway. बात समझ आ गई आपकी सर? जी अभी बल्कि जब ये यूक्रेन रशिया का वाकया हुआ, हालांकि टूर से वापस आया है, तो द मिनिस्टर्स वर काफी ज्यादा वो यानी थंपिंग के जो है अब तो
बाइडेन की कॉल आई है, अब बाइडेन की कॉल आई है, दे वर होपिंग कि बाइडेन लाजमी कॉल करेगा हमारी हेल्प लेने के लिए। यानी उनको पता नहीं किस मिसनोमर में वो रहते हैं कि द वर्ल्ड इज बीइंग रन बाय अस, और इमरान खान जो है वो दुनिया का हर मसला जो है उसका हल वो निकाल लेंगे। तो ये तो पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से आया है कि जब यूक्रेन का जो एम्बेसडर है उसने कहा है कि हमारे जो है मामला रूस के साथ तय करा दें, और उन्होंने ये भी कहा कि उससे पहले इमरान खान साहब जो हैं वो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो है मसालत कराने की कोशिश कर रहे हैं, उससे अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और रूस, चाइना और अमेरिका के दरमियान जो है वो मामला तय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये मतलब इनको ये ऑफिशियल अकाउंट से उनका ट्वीट था, तो इनको कौन समझाए भाई, दिस इज रियली बियॉन्ड रिडिकुलस। How can you somehow anything to anybody when the whole of the youth, Qawmi youth, starting from Arif Alvi down to Imran Khan, down to the junior most 22-year-old lout, when they share one brain cell, उससे चार्ज भी तो होना होता है ना. So it's brainless. It's brainless. I mean, they have no thought process whatsoever. सर आपको पता है कल एक तरफ जो कहते हैं प्रेसिडेंट साहब ने क्या हरकत की है कल? He went to the court as a private citizen. He has to, I think, reinvesture his oath, sir. क्यों? He went to a court of law as a private citizen, leaving his protocol for the president in the president house, and उसने अपना सारा कुछ जो है अपना फ्लैग और सारा प्रोटोकॉल जो है उसको सरेंडर करके, and he went to contest a case against him. I haven't read the details, but there are so many news that I am seeing in the morning, जो कि कल आज मीडिया के अंदर शोर मचा हुआ है कि प्रेसिडेंट साहब को दोबारा ओथ जो है लेना पड़ेगा, इसलिए कि he surrendered his position as a president and went to a court of law, and he wanted to get that monkey off his back while he is in the presidency, because the day he goes out he will be held in a case which is, I think, in an anti-terrorism court. एंटी-टेररिज्म कोर्ट में गए थे जो पीटीवी पे हमला किया था, उनकी exactly right. I haven't got the details yet. लेकिन कॉन्वर्सेशन जो है वो एविडेंस के तौर पे मौजूद है। उसमें वतीउल्लाह जान ने हैज मेड अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। उसने कहा ठीक है, वो बहुत अच्छा किया इन्होंने, ही वेंट एंड अपीयर्ड एज प्राइवेट सिटीजन एंड डिड नॉट इन्वोक हिज प्रेसिडेंशियल जो इम्यूनिटी है। But can he do it? Can he do it while he is in the presidency? उसने ये कहा है कि अगर अदालत से उनको सजा हो जाती है, then फिर ये क्या करेंगे? Sir, this whole thing was a mess. It was a constitutional mess. नहीं वो अपने तौर पे तो कर रहे हैं कि हम की बड़ा वो अवामी और बड़ा जो है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ वो कर रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट तो वो they are demeaning the office of the president and making fun of it. Absolutely. That's the question, actually. Have you do you remember that $20 million or $18 million his son Awab, yes, he spent that money. No, not spent. No. Not spent. Gathered from some. Collected that money. Collected it for new dental clinic. Dental clinic, dental institute or something. Yeah. Who was while that the chap? president was sitting there? Yeah. It was an abuse of authority. With the presidency as the backdrop. Yep. That's right. The presidency as the backdrop. So there is so much muck, so much filth under the ground, which is supposed to be raked out. Confidence. Yeah, no confidence move जो है. What do you think? What's इसका future क्या है? Let's have the last question. और ये जो neutrality है, isn't there under a compulsion जो abuse हल की जा रही है इस वक्त उनके ऊपर, तो it's under a compulsion. आपके आने से पहले हम यही बात कर रहे थे, exactly this, कि जितना गंद जमा हो गया ना GHQ के बाहर, इनका बनाया। Oh my God, yes, gate number 1 के बाहर garbage dump, वो उसकी वजह से। However, I will still hold my comment on the efficacy or otherwise of the no confidence move. देखिए बात ये है कि if even now they are depending on phone calls from here and phone calls from there to break people like the MQM or the BAP or the
PMLQ. Costly. How does anything matter? If what they actually have to do is to make an announcement, GHQ, I mean, that henceforward we will follow our oath and we will not interfere in politics, full stop, and lift the umbrella, now tattered, but umbrella is still there, lift it off Imran Khan's head and leave it to the politicians. Rein back a NAB. Abolish the bloody thing for that matter. You've got all sorts of things. FIA आपके पास है, courts आपके पास है, police आपके पास है, CID आपके पास है, IB आपके पास है. What have you got this NAB for? ये हटा दे and let politics take its own course. Absolutely. The constitution is there. It's there. If they remove him politically, I'm all for it. They have a caretaker prime minister. Inside of 3 months, he holds a general election in which the army does not rig, which it did the last time. We'll be all right. I promise you, we'll be all right within 2 years after that. अब देखेंगे मुल्क कहाँ जाता है. But everybody must stay within his or her constitutional limits. सर आपका बहुत टाइम हमने ले लिया. कर्नल साहब, शफीक साहब की और क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं. It was an honor, जी. It was a pleasure. I have a ton of questions, but I don't want to, नहीं मेरे ख्याल में वीकली, मेरे ख्याल में कामरान शफी साहब को अगर आप वीकली उनके साथ वीकली प्रोग्राम रखें तो by all means do it. We'll all please if you can give us some more time, तो बड़ी we will learn a lot from you. And Raji, you would kindly, if you'd kindly let all of us know what you want to discuss next, then we can work upon it. ठीक है. चीजें याद ही नहीं रहती ना. There is so much coming in that you don't even make notes, so that at least we can make notes on those subjects and then discuss them threadbare. उलझंदा सर उनते बादाम भी काम नहीं कर दे. ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਸ਼ਰਬਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ you are very alert. You're very alert. Mashallah. We are proud of you, alhamdulillah. No, most kind gentlemen, but the point is this, when there is so much input, कोई बंदे दा पुत्तर ही होवेगा जेड़ा हर चीज I mean, it's बंदे दा पुत्तर नहीं कर सकता. We have to open. God bless you. Thank you. Thank you. We have got two Abdalians and one. One. I am a medallion, sir. I'm from Central Model Government College. कौन सा? What? Which one? I am from Central Model Lahore, sir. कितना अच्छा स्कूल है यार वो. 10 years, yes, sir. That was a great school. It was a great school. It was. I was there for 10 years. Then in Government College Lahore, then Pakistan Army. Yeah. Great school. What unit were you? I was 26 Cavalry, sir. Oh, okay. Yeah. My first. I was wounded in 71, Cham Jordia. Acha. And I'm a disabled officer, by the way. Oh, sorry to hear that. No, sorry. That's my pride, sir. That's my singular pride. Alhamdulillah. Well done. Sir, मैं भी कुछ शामिल कर लूं. मैं भी I am also from Frontier Corps. माशाल्लाह. 20 के बाद वो डेढ़ महीने के लिए गया था मैं from CSS Academy. CSS वो तो देखने attachment. वो चोलिस्तान में जो है वो रात को APC में फिर रहे हैं, रात को फार हो रहे हैं और वो आके जगा रहे हैं, सर उठो मैं क्यों है, हमला करना है सर, हमला करना, उठो. Where was the Rangers? Was it the Rangers? नहीं, with the 20FF. Okay. मुल्तान में थे, मुल्तान में अटैच किया था मैं कोई महीने डेढ़ के लिए, शायद इससे भी काम था. तो वहां से वो एक्सरसाइज पे गए हुए थे, तो मैं उनके साथ तक कर्नल गुल आलम थे, ही रिटायर्ड एज ब्रिगेडियर, लाहौर में होते हैं आजकल. ही वाज द CEO. तो बड़ा अच्छा टाइम रहा. हम तो ऐसे ही थे, मतलब but for me it was really an experience which I relish. Just 1 month. About, yeah. I thought 3 महीने होता था. 3 महीने नहीं होता था. नहीं सर, वो थोड़ा सा था क्योंकि ये भुट्टो साहब के जमाने में डिस्काउंट ही नहीं हो गया था. तो फिर ये जब हम आए तो ज़्यादा गवर्नमेंट से हमारा पहला बैच था जिसको उन्होंने अटैच किया था. ये 79 की बात है. 79 की बात है ये. तो उस वक्त तो वो हम थोड़े महीने के लिए गए थे.
सो मेरे ख्याल मैं भी जिक्र कर दूं अपने मिलिट्री क्रेडेंशियल से। Well. One last thing. जी सर। Because we've been talking so much about the intelligence and what they do and so on and so forth. जब मैं फौज में था तो 2 postings जो थी ना, they were looked down upon by line officers. By line officers I mean people who were regimental officers, and then they went off to either instruction to their schools, staff instruction staff, yeah, or you AREs went पे to चले जाते थे, ARE पे, but either instructional or the general staff jobs like G3s and G2s, GS duty, junior officers. So I was not I was a troublesome officer. I've written about this so many times. तो यानी एक दफा सुबेदार मेजर ने मुझे सलूट नहीं किया तो मैंने अरेस्ट कर दिया. I took away his belt. And went and gave it to the adjutant and went to the playground, to the parade ground. तो वहाँ उसका रनर आया कि ये आप सलाम बोल रहे हैं. So I went back and he had a leave certificate ready. Here, CO's given you 10 days leave. So I said, thank you very much. Leave certificate. मैंने पकड़ा बस पकड़ी सियालकोट से वाह. Anyway, so I was this sort of officer. तो COs would keep me on courses most of the time कि इसको बाहर ही रखो या छुट्टी पे या courses पे. तो एक दिन मुझे CO ने बुलाया मुझे and smiling away, Kamran, I said, yes sir, I've got you a great course. I said, which sir? I course. I course was considered a career course at that time. Career course and so on. But as I say, we had seen the workings of the FIU and so on, sniffing up people's shoes, कि रात को कहाँ गया था, किसको मिला था, all that nonsense. So it was not done for line officers to go to I. So I said, sir, but I don't want to go to the I course. Please, something else. He says, no, you have to, and it's a great course, Flana. So I took 10 days leave. वो महीने के बाद था course, या 1.5 महीने के बाद. So I took 10 days leave and went to Abbottabad, where Colonel Tony Mahmood, SJ, my friend an icon. and my friend and senior, and also relative. So I went to him and I said, sir, for God's sake, get me off this course. So he looked at me and he said, good boy. So why he telephoned General Abdullah Malik, who was then the CGS, and told him this. That same day, the course was withdrawn. So I chutti butti kaat ke golf khel after baad I went back to the unit. So everybody said, your course is cancelled. I said, oh, I'm so sorry, sir, sort of thing, you know. So ek wo thi, which was not done, and the second was posting in the Rangers, because Rangers were neither police nor army. They were smugglers. They sat on the borders and brought cows from India and whiskey from India and cows and sent something from here. And ये उनका काम होता था. So these two were not considered good postings at all. Scouts, yes, Scouts was fine. Yes. जो भी scout हो, मगर ये दो नहीं. Just as a passing, मैंने कहा. बिल्कुल. वो एक्टिव ड्यूटी का हिस्सा समझा जाता था स्काउट्स को तो. नहीं, and they were honorable people. Honorable people, definitely. को गड़बड़ थोड़ी करते होंगे, but लेकिन रेंजर्स के बाद तो सर बंदा जो है वो नाकारा हो जाता. मैंने बहुत ऑफिसर्स, अच्छे ऑफिसर्स देखे हैं रेंजर्स से वापस आए. They were no good for the service. Yeah. Anyway, good luck, gentlemen. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you, Colonel Saab. Thank you. Take care and be well, sir. Thank you. And sir, हम आपको दोबारा कॉल करते रहेंगे. Where are these gentlemen? आप कहाँ हो located? Sir, आप खुद ही बता दें. Sir, I am in New York. अच्छा. Long Island में रहता हूँ मैं. I am a. जी मैं लॉस एंजल्स में हूँ. Los Angeles, oh, lovely. तो आप कहाँ हैं, sir? If I may ask. Yeah, of course. I am in El Salvador. Oh, you are in El Salvador. You are on continent. You are very. Then you are close to Los Angeles. So you must be coming to California. आते होंगे आप. I haven't been in such a long time. Yeah, we just went to New York, where my daughter is. Went to see her.
तो इंशाल्लाह आएंगे, मेरा दोस्त वहाँ रहता है सर न्यूयॉर्क आइए ब्रांच तो को यू कब हैव अ आऊंगा। होम हियर। So kind of you. You are on Long Island, are you? Yes sir. Acha. Thank you so much. नहीं, God bless you. God bless Okay. you. Look after Thank yourselves. Thank you, Okay, sir. It thank was a you. pleasure. Thank you. Thank you And so much. we'll have you back again, inshallah, pretty soon. Inshallah. Thank you, everybody, sir. Thank you खुदा so हाफिज़। much. डॉक्टर अब साहब पहले टेक केयर। बता देना क्या डिस्कस करना है, so that we are जी well सर prepared. जी वो we will सर get ये बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो इतने सवाल हो रहे हैं, जैसे अभी करना सब कह रहे हैं कि सवाल तो इतने ज्यादा हैं कि तो वो नेक्स्ट टाइम विल मेक इट मोर स्ट्रक्चर्ड इंशाल्लाह। yeah इसको structure narrow down, we can narrow it down. This जी was very well run. This was very well Yeah. run, by the way. It was well run. Shabash. Sir, it's Thank you very so much, sir. informal and very I would नहीं, say impromptu informative. में भी मजा आता है यार, because so मजा many ही things come in impromptu में है सर, which बिल्कुल are not. बिल्कुल Yeah. नहीं वो मतलब आइडिया ये था कि गपशप करूंगी, बैठक हाँ, जैसे कि हाँ, बैठक हाँ, कहते हैं, मजलिस कहते हैं, वो हमने वो आइडिया था। बिल्कुल तो वो Good उसमें idea. जरा थोड़ा रिलैक्स होकर ज्यादा बातें कर लेते हैं, जैसे Yeah. हसन अब्दाल की बातें भी हो गई और 20FF की भी हो गई और ट्रम्प की भी हो गई, Absolutely. सेंट्रल Our मॉडल। viewers love it, sir. Our viewers love it. Those Mine who was talk to us later on. Yeah. mine was, I must say, mine was for Baluch, the Prince of Wales zone. Oh, mashallah. Acha, you are from Fort Bluch. Mashallah, mashallah. What an honorable regiment. Yeah, great regiment. Great regiment. Great. And हमें बात होगी शबीर शरीफ की। Oh, yes, sir. He was our platoon commander हाँ too. He was our platoon commander too. We are so lucky we had that those SJs from 1965 war. They all got together in PM in those days. Shabir Sharif was there. Then Asif Nawaz was there. And of course, Nader Pervez was there. What a collection of platoon commanders. Anyway, good luck. Thank you, sir. Thank you. Thank you once again. God Thank you so bless much. you. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz. Yeah. How does one leave?